Hello dear students, welcome to our today's class, and today we are going to start the revision of our next chapter, that is chapter number 7, lenses. And here we are going to see some objectives of this chapter. Okay, so I hope you all are ready for the different kinds of revision. Yes, so as usual the first question says choose a correct alternative. It is of 1 mark each. Yes, the first question, a ray of light gets refracted dash while entering the lens. Once, twice, thrice doesn't happen. ओके तो अगर एक रे ऑफ लाइट है वो जब लेंस में एंटर होती है तब वो कितने टाइम रिफ्रैक्ट होती है. ओके सो व्हाट इज़ द आंसर ओवर हियर? दैट इज द आंसर इज व्हाट? What do you think? Yes, answer is B, twice. It gets refracted twice while entering the lens. Okay, next question. The point inside the lens on the principal axis through which the light rays pass without changing their path is called what? Center of curvature, optical center, principal focus, axiom point. So what do you think? What is the answer over here? दैट वन पॉइंट. ओके जो लेंस के इनसाइड होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से क्या होती है लाइट रेज पास होती है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ. सो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? येस, इट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्शन बी. Third question, virtual image is formed if an object is placed at 2f2, at 2f1, okay, at focus f1 and between f1 and O. Okay, so here the answer is between f1 and O. Okay, O मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ 1 and O. Okay. Fourth question, in the convex lens if an object is placed at 2f1 the image is formed at. ओके तो ये आपको तभी समझ में आ जाएगा जब भी आप उसको ड्रॉ करोगे. और एल्स इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 one chart is given, and in that chart what is given? Position of the object, position of the image, okay, size of the image, nature of the image, वो सब दिया है. वहाँ से आपको इसका आंसर मिल सकता है. ठीक है. Okay, so here what will be the answer? f1 to f2, beyond f2 f1, on the same side of the lens. Okay, so what do you think? What is the answer over here? If you have textbook, please open the textbook, and in there the third point says position of an object to f1. तो position of an image क्या होगा? 2f2. okay, option B 2f2. ठीक है. okay, all the distances parallel to the principal axis are measured from what? okay, are measured from optical center. okay. Sixth question, a small hole of changing diameter at the center of the iris is called what? Small hole. option D pupil. ओके तो ये जो सब है ये आपको पता होना चाहिए. इट विल कम फॉर द एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर दिस MCQ काइंड ऑफ कंटेंट. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई the near point is at C 25 centimeter. okay, the near point क्या होता है for a normal human eye? 25 centimeter. option C. The image formed by dashed lens is always virtual and small. Plane convex, biconvex, biconcave, bifocal. What is the answer? The answer is B, biconvex. okay, the image formed by biconvex lens, bi मतलब क्या होता है? दो convex lens होते हैं. is always virtual and small. virtual मतलब क्या? सबको पता है राइट? वो जो दो रे है वो एक साथ नहीं मिलती है तो हमें उसको पीछे से और ड्रॉ करना पड़ता है so that they will meet at a one particular point. so that when that kind of image is formed, that is called as virtual image. okay, yes, so here what is the answer? Biconvex. option B.
9. In a relaxed state, the focal length of the human eye is how much? It is a 2 centimeter. ओके जब ह्यूमन आई जो होता है वो रिलैक्स स्टेट में होता है तब उसका फोकल लेंथ कितना होता है? 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन है. ओके yes, now there are some other MCQs, other multiple choice questions are there. Let's see. First question, for a specific glass lens f is equal to 0.5, this is the only information given to the student. Which type of lens is given to him and what is its power? ओके तो पावर का जो फॉर्मूला है वो सबको पता है, राइट? यस. सो हियर व्हाट इज़ गिवन, पावर मतलब क्या होता है? पावर का फॉर्मूला यू विल गेट इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85. ओके सो व्हाट इज़ द ऑप्शन? पावर 2D कॉन्वेक्स लेंस, पावर 1D कॉन्केव लेंस, पावर 0.5 कॉन्केव लेंस, पावर 0.2D कॉन्वेक्स लेंस. तो इसका आंसर जो है वो ध्यान में रखना है, दैट इज़ पावर 2D एंड विच लेंस इज यूज्ड ओवर हियर? दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस. ओके ओके इन मायोपिया द ह्यूमन आई, ऑप्शन ए, कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, cannot see the distant object clearly, cannot see nearby as well as distant object clearly, can see nearby as well as distant object clearly. तो मायोपिया में क्या होता है सबको पता है, राइट? यू ऑल नो दैट हम जो है वो क्या होते हैं, हमें दूर का जो है वो क्लियरली नहीं दिखाई देता है इन द केस ऑफ मायोपिया. सो हियर द ऑप्शन इज बी, cannot see the distant object clearly. Okay. Yes, now due to elongation of dash and increase in curvature of the eye lens, a person cannot see the distant object clearly. Due to what? Due to elongation of eyeball. Okay, due to elongation of eyeball and increase in the curvature of eye lens, what happens? A person cannot see the distant object clearly. ठीक है? Okay, now here in this question, here you can see in hypermetropia human eye can see the distant object clearly, can see nearby object distinctly, cannot see nearby as well as distant object clearly, and here this is the fourth option. So what is the answer over here? In hypermetropia human eye can see nearby object distinctly. ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि मायोपिया के केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, लाइक दैट. ओके बायफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट. ओके 20 times larger image can be obtained by using a simple microscope. ओके तो बहुत सारे यूजेस हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के. क्या होता है? 20 times लार्जर इमेज जो होता है वो फॉर्म होता है बाय यूजिंग व्हाट? सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन, dash is a combination of two convex lenses with small focal length. ओके तो वो क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं होता है. सिंपल का माइक्रोस्कोप में टू कॉन्वेक्स लेंस नहीं होते, बट हियर यू कैन सी इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस विद अ स्मॉल फोकल length. Okay, yes, so this is MCQ kind of questions. Now find the correlation. Convex lens converging तो concave lens क्या होगा? Diverging. Okay, near sightedness elongated eyeball, then far sightedness. Yes, what is the answer over here? Near sightedness elongated eyeball, then far sightedness, what is the answer? येस फ्लैटरिंग ऑफ आईबॉल. ओके नियर साइटेडनेस में आईबॉल क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, बट फार साइटेडनेस में क्या होगा? फ्लैटर्ड होगा. ठीक है? ओके थर्ड नियर साइटेडनेस कॉन्केव लेंस, फार साइटेडनेस कॉन्वेक्स लेंस. फोर्थ ऑब्जेक्ट एट 2f1 ऑफ अ कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्म्ड एट 2f2. तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो f1 में होगा तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे, विच हैविंग अ वेरी लार्ज साइज. ओके हाँ
यहाँ पे देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 1। जैसे कि मैंने पहले बताया सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है, 2 कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो मीटर में उसको मेजर करते हैं। इन पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है। पावर ऑफ लेंथ का यूनिट क्या है, डायोप्टर, एंड फोकल लेंथ का यूनिट है मीटर। ओके, सो हियर इन दिस केस this image you can see, in this image what it is showing, like a convex lens which having myopic eyes. Okay, so here hypermetro, यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस आएगा, हियर यू कैन सी अ कॉन्वेक्स लेंस विच हैविंग हाइपरमेट्रोपिक आई. Okay, now here you can see this image. Okay, this image here, this is an eye. So here object near the lens. Okay, this is the object जो है वो lenses के near है, and यहाँ पे here you can see object कहाँ पर है, here you can see object is at focus. Okay, and here you can see object near the lens, and this is the answer of this image is object is at focus. Okay, now the next question is find the odd man out. It is of 1 mark each. First question, focal length, radius of curvature, image distance and size of image. So what do you think, what is the answer over here? कौन सा एक वर्ड है जो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, यू थिंक इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ ऑड. सो व्हाट इज़ द आंसर ओवर हियर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज ये जो है ये डिफरेंट है, because this everything, these 3 are belongs to what, it is a belongs to a certain kind of image जिसमें ये सब यूज़ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ उसका क्या है एंड ऑल. साइज ऑफ इमेज ये पर्टिकुलरली एक डिफरेंट ही है. ठीक है. ओके, सेकेंड, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीफोन एंड प्रिज्म. ऑब्वियसली द आंसर इज प्रिज्म. थर्ड, आई लेंस, रेटिना, सेरिबेलम, कॉर्निया. तो क्या आंसर है, सेरिबेलम. वाई सेरिबेलम, बिकॉज इट इज़ बिलोंग्स टू वॉट, इट इज़ बिलोंग, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये एक ब्रेन का पार्ट है. ठीक है. एंड दिस एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू वॉट, आई का पार्ट. ठीक है. yes, so cerebellum is it is related to brain, so that's why it is odd man out over here. Fourth, object distance, image distance, focal length, principal axis. Principal axis. Okay. Fifth, eyepiece, magnifier, kaleidoscope, telescope. Kaleidoscope is odd man out over here. Okay, this is belongs to eyes. Okay, and kaleidoscope is something which is different. So here this is the odd man out. Kaleidoscope is the answer. Fourth, write the names. First one is the distance between the focus and optical center. क्या है, उसको क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ कॉल्ड एज फोकल लेंथ. ओके, ध्यान में रखना है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. सेकेंड, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन. ओके, ऐसा जो पार्ट है ह्यूमन आई का वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पर, टू द ब्रेन. So what is that called, that is called optic nerve. Okay, it is called as optic nerve. The lens used in simple microscope, which lens, convex lens. Okay, the ability of lens to adjust the focal length as per the need is power of accommodation. ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है एज पर द नीड. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पावर ऑफ अकोमोडेशन. Fifth one, the defect of eye occurring due to aging. So it is called as presbyopia. Okay, the fleshy screen behind the cornea. कॉर्निया के बिहाइंड जो फ्लैशी स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, आयरिश. ठीक है. ओके,
The screen with the light sensitive cells in human eye is called as retina. Retina क्या होती है? Sensitive cells होते हैं. It is consist of light sensitive cells. The sensation on the retina persists for a while is persistence of vision. Okay, sensation है on the retina which persist for a while is called as persistence of vision. का persistence होता है वहाँ पे. The persons which are unable to distinguish between the different colors is called as colorblind. Okay, the imaginary line which is passing through the two optical centers of lens, what is that line called? Principal axis. Line आया, imaginary line आया, मतलब लिखने का principal axis. Okay, true or false? Here some true or false are given. We are going to take someone from this someone from this all. Okay, yes, so let's see the first one. क्या है first one? Convex magnifying glass is called divergent magnifying glass and concave magnifying glass is called converging magnifying glass. So what do you think, is this statement is true or false? क्या है यहाँ पे, कुछ उल्टा है कि सब अच्छा है, सब स्ट्रेट है? दिस स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है उन्होंने स्टेटमेंट में. So that's why students remember you have to read the sentence very carefully. Sometimes आपको आंसर पता होता है, you know the answer, but in आप क्या करते हैं, जल्दी में होते हैं बहुत सारे पेपर लिखने के टाइम पे, तो बहुत जन क्या करते हैं, जैसे ही सेंटेंस रीड किया ऐसा वैसा आंसर लिख दिया. बट व्हाट इज़ दैट आंसर कंसिस्ट ऑफ? यू हैव टू रीड दैट आंसर वेरी केयरफुली. आंसर भी आपको रीड करना है और क्वेश्चन पहले रीड करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द आंसर. After that you have to read both question and answer and you have to clarify yourself that you have written rightly or nicely or some kind of mistake is there in it, so that you can correct it at that time only. Okay, now let's check this. This defect of vision can be remedied by using endoscopic magnifying glass with proper focal length. False. Okay, this is a false answer. Now here you can see 54 wala. The image of an object at an infinite distance is obtained in a real and smooth form through a convex magnifying glass. This is also false statement. The power of the magnifying glass depends on the distance of the magnifying glass. Yes, it is depend upon the distance of magnifying glass. What do you think over here? Yes, right or wrong? This is a false statement. This is false statement. 56. The lens of the eye is flattened when looking at the nearby object. Is it get flattened? No. Okay, this is a false statement. For a healthy human eye, the distant point is infinite distance. Yes, this is a true statement. 57. This is a true statement. 58. Vision defects increases the distance between the lens of the eye and the retina of the eye. There are defects in myopia. तो ये क्या है, myopia का ये क्या बताता है ये question? Okay, distance between the lens of the eye and retina of the eye. Is this defects are in myopia? Yes. 58. This is a true statement. The virtual shape of the object seen by the eye depends on the angle held by the object with the eye. Here 59. This is also a true statement. ठीक है? Yes. So like this the question will come where you have to read the question carefully. Write an explanation. Okay. तो ये जो है ये सब आपके आई से रिलेटेड है. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस में क्या होता है? द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड एज center of curvature of lens. Each lens has what? Two center of curvature, that is C1 and C2.
ओके. द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस on the principal axis through which the light rays pass without changing their path is called as optical center. Principal focus. What is called as principal focus? The point on the principal axis where all the incident rays are parallel to the principal axis. Okay, actually they meet or appear to meet after a refraction from the spherical lens is called as principal focus of a spherical lens. Focal length, read this properly. Principal axis, you have to read this things very properly. Okay, I'm not going to read this everything because it is already there in your textbook. Okay, wait, I'll tell you the textbook page number where you can get this all definitions. You will get this all definition in your textbook page number 81. Okay, where you can say this everything with the help of diagram. So अगर आप diagram भी ध्यान में रखोगे तभी भी आपको आंसर लिखने में आ जाएगा. Okay, the farthest distance of the distinct vision. ओके तो ये क्या है? द ह्यूमन आई कैन ऑब्जेक्ट keep at intensity clearly with the healthy eye. So farthest distance of distinct vision is infinity of the normal human eye. Power of accommodation and persistence of vision का definition I have already given. Go through it, go through the content. Okay, and thank you, all the best.